आज का सेशन शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एग्जाम्स टुडे। एज बैंकिंग एस्पिरेंट्स हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हम एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस सेशन इज़ स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स हु हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, बट फिर भी रिजल्ट कहीं ना कहीं उनके हाथों में नहीं आ रहा है। And the main problem lies not in your knowledge. It does not lie in your wisdom, in your practicing, in your hard work. It lies deep within you, जो कि आपको शायद realize भी नहीं हो रहा है. And the problem is that we don't take exams as something we love and something we are willingly doing, but we take it as a burden. हम एग्जाम को बर्डन की तरह लेते हैं और रिजल्ट को हम लोग चाहते हैं, वी ट्राई टू अचीव दैट, सो वी कंसिडर इट एज अ रिवॉर्ड। बट उस रिवॉर्ड के पीछे का जो हार्ड वर्क है, जब तक आप उसको एक बर्डन की तरह लेते रहोगे तब तक वो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आएगा। All the students who clear the examination subconsciously don't even realize when they start loving the process, loving the exam. And when they start doing that, they don't consider it as a burden anymore. They don't feel exhausted anymore. And automatically उसकी वजह से result उनके हाथ में आ ही जाता है. In order to help you understand the actuality of it and the reality of it, मैं आपको दो parts में समझाने की कोशिश करूंगा how to love exams. Number one, why do we not love exams? ये भी समझना बहुत जरूरी है in order to understand the brain's understanding or brain's power to hate exams. And then we'll try and understand how exactly can we try and love exams. उस प्रोसेस में आपको क्या क्या करना है जिससे कि आप एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह ना लें। तो सबसे पहले रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बाय इट्स वेरी नेचर are attracted towards love and are repulsed from hate. हमारा repulsion होता है hate से and we are attracted towards love. That's a basic human nature. If you don't fall in this category, then probably that student is a sadist because he doesn't believe or value love and he tries to find pleasure in hate. But that doesn't happen much. बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से habituated होते हैं. Because of this, we start caring about the result, because the result is something that provides us with a feeling of love, that provides us with a feeling of comfort. But at the same time, we start not caring about the exam or hating the exam, and we start considering the exam as a burden, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की लव की फीलिंग नहीं है. It does not exist. Because just by excelling in your exam, you're not getting any direct result. आपको reward तो actually जो मिल रहा है वो exam की वजह से ही मिल रहा है, but the hard work that is involved behind the exam, the kind of sacrifices that are involved behind the exam, make us have this feeling that exam is not equal to love. So automatically we get the opposite feeling that exam is a burden, whereas the result is a reward that we're getting, and therefore we start fantasizing about the result, we start loving the result itself. तो हमारा brain jump कर रहा है from the exam towards the result just because of its natural tendency to get attracted towards love and to repel, to have a repulsion from something that we don't care about, something that we don't love. Whether we hate it or whether we don't hate it, it doesn't matter. Now, having understood why the human brain uh, goes or attracts towards love and stays away from what we don't love, we start attracting ourselves towards the result and we start repulsing ourselves from the examination. इसकी वजह से एग्जामिनेशन एक बर्डन की तरह फील होने लगता है. The second part, which will tell you the process of changing your brain's wiring, जिससे कि आप एग्जाम को ही प्यार करने लगो. You start valuing the exam itself. You start attaching certain rewards with the exam itself. Automatically, your focus will shift from the result towards the examination. You might say it's a natural tendency, I cannot change it. I say human wiring is all about habit. The moment you start creating different habits, your human wiring starts changing. So you can do whatever you want. Human limits have no
human body and human mind has no limits. You just have to be disciplined enough to change your wiring, and in order to do that you have to change your habits. तो उसी के ऊपर हम लोग अब डिस्कस करेंगे. How exactly can you start loving the examination itself and not care about the result? रिजल्ट के पीछे ना भाग के एग्जाम के पीछे भागना कैसे शुरू करोगे? जैसे कि थ्री इडियट्स में बताया हुआ है, एक्सीलेंस के पीछे भाग, एग्जाम के पीछे या रिजल्ट के पीछे मत भाग. यहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. एग्जाम से हम एक्सीलेंस को अटैच करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज हाउ वी विल स्टार्ट वैल्यूइंग द एग्जाम इटसेल्फ. और हम रिजल्ट को एक्सीलेंस से अटैच नहीं करेंगे, उसको डिटैच करेंगे, बिकॉज रिजल्ट इज द रिवॉर्ड दैट यू गेटिंग फॉर डूइंग वेल इन द एग्जाम. ऑटोमेटिकली आपकी वायरिंग चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू इट. अगर हम वही करते रहेंगे जो स्कूल्स या कॉलेजेस में हम करते आते थे, देन इट वोंट वर्क. स्कूल कॉलेज में हम क्या करते थे? स्कूल और कॉलेज में बुक्स एंड एग्जामिनेशंस वर अ कंपल्शन. मेजॉरिटी ऑफ अस आउट हियर आर एवरेज, अबव एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स. बहुत कम ही लोग होंगे जो एक्सीलेंस ऑलरेडी अचीव कर चुके होंगे स्कूल या कॉलेज में. जो ऑलरेडी स्कूल या कॉलेज में एक्सीलेंट स्टूडेंट्स थे, वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स थे, आप उनसे बात करोगे तो आपको रियलाइज होगा उनके लिए एग्जाम एंड उनके लिए बुक्स पढ़ना इज नॉट समथिंग ऑफ अ कंपल्शन. उनको मजा आने लगता है तो बस वो पढ़ते रहते हैं. और हमें लगता है इनको बुक्स में क्यों मजा आ रहा है, देयर आर सो मेनी बेटर थिंग्स टू डू, एंड दे कीप लविंग द बुक्स. दैट्स वेयर इट चेंजेस फॉर अस. Majority of us have a compulsion to read books and to carry out, to give exams when we are in school or college, and that is why, because of this compulsion, we have a tendency to escape from the examination. हमारी टेंडेंसी होती है कि एग्जाम बिकॉज एक कंपल्शन है, तो जितना उससे दूर रहोगे उतना अच्छा है. बट अभी क्या फर्क है? दिस इज योर ओन डिसीजन टू राइट एग्जाम्स फॉर करियर ग्रोथ. नोबडी इज टेलिंग यू कि ये एग्जाम नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, तो कोई डिग्री नहीं होगी आपके पास, आप आगे कुछ नहीं कर सकते, योर करियर विल स्टॉप. नोबडी इज सेइंग दैट टू यू. मेजॉरिटी ऑफ अस हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड और आर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुएटिंग. ग्रेजुएशन के बाद कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ के साथ अच्छा कर लोगे. बैंकिंग एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स आर नॉट द ओनली एग्जाम्स दैट यू आर सपोज टू बी राइटिंग, है ना. दिस इज नॉट अ नेचुरल प्रोग्रेशन. सो इट्स आवर ओन डिसीजन, and there is no compulsion at all on us to write these exams for career growth. There are multiple other ways of growing in your career which are probably even easier, but we make this decision to go through this difficult journey of writing the exams. तो जब आपने डिसीजन खुद लिया है तो उस डिसीजन के अंडरलाइंग जो रिवॉर्ड्स हैं उनको भी थोड़ा सा वैल्यू करने की कोशिश करो. एग्जाम के थ्रू आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो. एग्जाम के थ्रू यू कैन क्रिटिकली एनालाइज योर ओन परफॉर्मेंस. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड जज बिकॉज पीपल हैव दिस टेंडेंसी ऑफ यू थिंकिंग कि अगर मैं सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा हूं, अब अगर मैं क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं, देन आई एम जजिंग माई सेल्फ. यू आर नो वेयर जजिंग योर सेल्फ और योर परफॉर्मेंस. यू आर जस्ट एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि मैं कहाँ खड़ा हूं with respect to the competition, and then you start improving your performance. ऐसे ही जब आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन तो आपका काम है इवैल्यूएट करना अपने प्रेजेंट लेवल को, अपने सेल्फ को इवैल्यूएट करना, एंड देन ओनली यू स्टार्ट ऑन द जर्नी ऑफ इंप्रूविंग योर सेल्फ थ्रू क्रिटिकल एनालिसिस रेगुलरली. और ये पॉसिबल हो पाता है एग्जाम के थ्रू. द एग्जामिनेशन मेक्स दिस हैपन. द एग्जामिनेशन हेल्प्स यू to evaluate yourself, to critically analyze yourself and to improve yourself. और जब आप ये करने लगते हो, then your focus shifts towards the exam automatically, and that results in success. But till the time you don't do this, till the time you don't realize that it's my own decision to write this exam, nobody is forcing it me, it's not a compulsion. और पहला स्टेप है एग्जाम देना. तो अगर मुझे एग्जाम लिखना है तो लेट मी फोकस ऑन सेल्फ इवैल्यूएशन, लेट मी फोकस ऑन सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस, लेट मी फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट. और सब मैं भूल जाता हूँ बिकॉज आई एम डूइंग इट आउट ऑफ माई ओन विल. नोबडी इज फोर्सिंग मी टू डू इट. रिजल्ट नहीं भी निकला तो ठीक है, माई फोकस इज नॉट दैट. माई फोकस इज ओनली ऑन द एग्जामिनेशन जो मैंने खुद डिसाइड किया है लिखने का. ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द एग्जाम,
it will give you some kind of result. The result might be according to your desires. The result might be smaller than what you desire. It might even be bigger than what you desire. That depends completely on your performance, on your level of self-evaluation, critical analysis, and improvement. Okay, but if you keep focusing on the result like we did in school and college, because we knew that examination was a compulsion for us, but result was what mattered. जहां तक 70-75% बन रहा है, ठीक है, इतना रिजल्ट चाहिए, इतना ही पढ़ना है. ऑटोमेटिकली इन स्कूल एंड कॉलेज वी कुड पास, हम लोग पास हो जाते थे, बट हम लोग सक्सीड नहीं होते थे. Passing the examination is not equal to success in the examination, but हमारा brain कहता है कि पास हो जाओगे तो सक्सेस मिल गया. So we are still in that phase, and the moment you start understanding and changing this wiring of your brain, automatically आपको दिखने लगेगा कि रिजल्ट पे फोकस जब तक करोगे तब तक आपको एक्चुअली में सक्सेस नहीं मिलेगा. द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द एग्जाम इटसेल्फ, because that is something that you've decided for yourself, that is something that you're willingly getting into, automatically you will become closer and closer to success. और इसके प्रोसेस में तीन ही चीजें आपको करनी है मेजरली. नंबर वन, सेल्फ इवैल्यूएशन. नंबर टू, क्रिटिकल एनालिसिस. एंड नंबर थ्री, इम्प्रूवमेंट. जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस रेगुलरली करोगे, ऑटोमेटिकली आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा ही दिखेगा. इफ यू फील दैट यू वांट मी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करना है, सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करना है, एंड फाइनली इम्प्रूवमेंट कैसे मेजर करना है, then you can put it in the comment section below, जिससे मुझे पता लगे that students care about it, understand the importance of this, and so I will then discuss that as well. मैं एक और सेशन रखूंगा, मैं उसमें फिर से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि सेल्फ इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट, इस प्रोसेस को करना कैसे है, हाउ टू गो अबाउट डूइंग इट इफ यू डोंट नो इट ऑलरेडी. So don't forget to write below what you feel you need and what you feel you want from me as a mentor, as a teacher. Automatically, I will also understand what students actually value in their life as an aspirant. So this was all for this session. I hope you liked it. I hope you gained something from it. And I'm very, very sure this small advice is going to help you look at the exams from a different lens, from a different perspective, and that will automatically result in success to you. I will see you again. More power to you. Bye bye. Take care.